Okay. In next class, we will try to understand C++ variables. Okay. In previous class, when I started to teach Python, Java, in any programming language, variables are very important. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी हो, जावा हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, कहीं भी जाएं हम लोगों को वेरिएबल्स की बहुत जरूरत पड़ता है डाटा स्टोर करने के लिए. We need. ओके. सो वेरिएबल्स बहुत ही जरूरी होता है. वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर द डाटा इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. either it may be सी हो, सी प्लस प्लस हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, जावा हो, किसी में भी वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वेरिएबल्स विल बी यूज्ड टू स्टोर डाटा. ओके. सो इंत ముందు इससे पिछले क्लासेस में हमने पढ़ लिया कि पाइथन जावा में डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा के बारे में पढ़े थे. इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, बहुत सारे डाटे. ओके. सो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कहीं भी है आपको वेरिएबल्स की जरूरत पड़ता है डाटा को स्टोर करने के लिए. सो सी प्लस प्लस के अंदर कितना क्या क्या टाइप डाटा टाइप हम देखेंगे. So, okay, we will try to understand different data types in C++. One is that's integer. Okay, in integer is a data type, double is a data type, char, string, bool, these are all data types in C++. Okay, integer. Integer stores integer values. ऑलरेडी मैंने बताया कि इंटीजर्स क्या होता है. जो डेसिमल वैल्यूज ना होते हैं, पूर्ण संख्या, मतलब द नंबर which don't have any fraction part, decimal. Okay. Even though डॉट जीरो फ्लोट नंबर होता है, मतलब डेसिमल वैल्यू. इफ 2.0 फ्लोट है, इंटीजर नहीं है. अगर इंटीजर चाहिए तो कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं होना चाहिए. विदाउट डेसिमल्स. ओके, सच एज 1 to 3, 1 to 3.0, ये इंटीजर नहीं होता है. सपोज इफ यू राइट 1 to 3, 123.0, it will be considered as float. So all positive and negative numbers, they are called integers. Okay, without decimal values. Without decimal values. Okay. Next, double. Double is a data data type. It is a data type. So it stores floating point numbers. Floating point numbers, what? They are the numbers with decimals, such as 19.999, 19.0. That is not integer, that is a float. Or minus 19.99, मतलब negative, all negative and positive decimal values. So double is a variable which stores floating point numbers, means decimal numbers. Integer is a variable, so it stores integer type of data. Char is a variable. Char stores single characters, such as a. In Java, C also, single line, single characters will be represented single quotation marks.
Strings will be represented in double quotation mark. Char values are only one character, single quotes. Okay. String is what? String, just hello world is a string. String means sequence of characters, text. Hello world is a sequence of characters, otherwise text. So always the text, otherwise sequence of characters that must be kept in double quotation marks. So string बोलते हैं. String को हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर रखना पड़ता है. String values are surrounded by double quotes. Char values are surrounded by single quotes. But char के अंदर only one character. Next, bool variable. Bool variable stores boolean data types. हिंदी में, इंग्लिश में एस आर नो बोलते हैं. दो स्टेट होता है एस आर नो. तो इन प्रोग्रामिंग में एस आर नो को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रू फॉल्स होता है. एस मीन्स ट्रू, नो मतलब फॉल्स. ओनली टू स्टेट्स. दीज आर कॉल्ड boolean values. Boolean values is a data type. Okay. So these are all variables to store different data types. Okay. There are different types of variables. Okay. To store the data type. So variables are what? Variables, they are the memory containers. Containers, you will not understand what is container. You use in computer language memory locations. Simply memory locations. Okay. So variables are what? Memory locations. Every memory location in computer's memory kept with a name. Okay, that name is called variable. So that whenever data is stored in that memory location, we can call with that name, variable name. Okay. So variables are memory locations in computer's memory to store the data. Okay. Every computer's memory location will be labeled with a name. कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हर एक मेमोरी लोकेशन को एक नाम से नाम नाम रखते हैं, ताकि बहुत सारे मेमोरी लोकेशन होते हैं. लैक्स एंड लैक्स मेमोरी लोकेशन होते हैं. हर मेमोरी लोकेशन के अंदर आप डाटा स्टोर करते हैं, तो उस मेमोरी लोकेशन के अंदर किस मेमोरी लोकेशन के अंदर क्या डाटा स्टोर किया हो, उस मेमोरी लोकेशन को आप कॉल करोगे नाम से, वो डाटा आ जाएगा. ठीक है. तो वेरिएबल्स कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस को नाम नाम रखा हो. सो डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल इन सी प्लस प्लस. वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं? टू क्रिएट ए वेरिएबल, स्पेसिफाई टाइप एंड असाइन इट ए वैल्यू. वेरिएबल को क्रिएट करने से पहले हमको बताना पड़ता है वो कुछ टाइप का वेरिएबल है. वो इंटीजर टाइप का है, डबल है, मतलब फ्लोट वैल्यू को स्टोर करेगा, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, बूलियन वैल्यू को स्टोर करेगा, या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करेगा, कैरेक्टर. बट फर्स्ट आपने टाइप बताना पड़ता. टाइप मतलब कुछ टाइप वेरिएबल है. अगर हमने इंट लिखा, वो इन टाइप वेरिएबल है, उसको तो नाम देना पड़ेगा. एक्स इज इक्वल वैल्यू 5, ठीक है, या -5. बट इंट एक्स इज इक्वल 5.0 गलत होता है. इट्स रॉन्ग. वाई? बिकॉज 5.0 इज ए फ्लोट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू. अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो इंट में, तो रॉन्ग होगा, गलत होगा. टाइप मीन्स जितना भी वेरिएबल टाइप्स बताए, इंट, डबल, बूल, स्ट्रिंग, कैर. ओके. नेम इज व्हाट? वेरिएबल नेम कोई भी नेम. मेरा नाम वासु, आपका नाम एक्स वाई जेड, स्कूल नेम, एनी नेम, एक्स वाई जेड, एक्स माई नेम. हाँ. इक्वल साइन वैल्यू को असाइन करते समय, कोई भी वैल्यू असाइन करना है तो वेरिएबल नेम और वैल्यू इनके बीच में इज इक्वल टू कंपल्सरी द इक्वल साइन इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू. वैल्यू को असाइन करते हैं. सो ये तरीका होता है आपका क्रिएट करने. किसको क्रिएट कर रहे हैं आप?
आप क्रिएट कर रहे वेरिएबल को। सो वेरिएबल क्रिएट करता है तो उसको एक नंबर, उसको कोई भी वैल्यू स्टोर होता है, नंबर कुछ भी हो। कैसा करते हैं देखते हैं, लेट अस सी हाउ वेरिएबल्स आर क्रिएटेड। कैसा वेरिएबल क्रिएट होता है देखते हैं। ये ये माइनम इज ए वेरिएबल। तो उस किस टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का वेरिएबल है। सो ये माइनम इज ए वेरिएबल, ये वेरिएबल इंट टाइप है, इसके अंदर डाटा, इंटीजर डाटा स्टोर करता है। इंटीजर डाटा में बताया था नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। ओके। प्रिंट आउट लेने के लिए सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू गेट प्रिंट ऑन द स्क्रीन। उस वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, इस वेरिएबल नेम है उसको कॉल करना है। मैंने बताया था वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस का नाम नाम है। बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस होते हैं, हर एक मेमोरी लोकेशन को एक नाम से जाना जाता है। सो दैट वी कैन कॉल the memory location name. So whatever the data stored in that memory, because in lakhs of memory locations, how can we identify them by name? Okay, whatever the data stored in that memory, जो भी डाटा उन मेमोरी लोकेशंस में स्टोर हो गया उसको कैसे कॉल करोगे आप, नाम से, कोई भी नाम से। अदरवाइज ये लैक्स एंड लैक मेमोरी लोकेशंस को कैसे जानते हैं, नाम से। उस नाम का वो नाम होता है वेरिएबल नाम। ओके, उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्यों वेरिएबल इसलिए बोलते हैं, उसका वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। अभी 15 है, नेक्स्ट आप 20 करोगे उसको, सो वैल्यू इज बीइंग वेरिड। सो वैल्यू इज बीइंग वेरिड, सो इट इज अ वेरिएबल। ओके, नाउ लेट अस चेक दैट कोड सिंटैक्स इज व्हाट, हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल। देखते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए कैसा सिंटैक्स है, कैसा लिखते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेरिएबल क्रिएट करना आपको आना चाहिए। क्योंकि डिफरेंट डाटा टाइप, मैंने जैसे बताया डाटा टाइप्स, इंटीजर, इंटीजर मतलब ऑल फ्लो, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, जो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब अगर 15.0 आपने रख दी इधर, 15.0, सो 15.0 भी ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये फ्लोट हो जाता है। अब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं माइनम बोल के, माइनम वेरिएबल है, ये इंट टाइप बोल रहा हूँ। सो इंटीजर, मैंने बताया इंटीजर डाटा ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। इवन द पॉइंट जीरो लिख दिया, इट विल गिव एरर। एरर क्यों, ये पॉइंट जीरो मतलब जब भी आपने डॉट डाल दिया डेसिमल है। वेन एवर यू कीप डॉट मीन डेसिमल, so it is indicating that is a decimal value, float number. You will get error here. Understood that? Understood that or not? It is very important, हाँ, आपको समझना पड़ेगा। इंटीजर कुछ टाइप ऑफ डाटा, मैंने बताया ये मेन फंक्शन के अंदर ये फ्लावर ब्रेस है। इसके अंदर कंपाइलर, कंपाइलर क्या मैंने बताया, कंपाइलर इज ए प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम है। आप जिस लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, सो इनबिल्ट रहता है। वेन एवर यू लोड दैट लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा। पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी, सी प्लस प्लस, जावा ये सब कंपाइलर बेस्ड है। सो कंपाइलर इज ए प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वो इनबिल्ट रहते हैं। इट इज इनबिल्ट इन साइड ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेन एवर यू इंस्टॉल दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन साइड ऑफ दैट कंपाइलर इज देयर। what it does, it converts the source code। मैंने बताया ये जितना भी कोड, whatever the code you have written, it is source code है। इस source code को you can understand as a human being, you can understand this, and computer can't understand microprocessor। What is the brain of computer? Central processing unit। So microprocessor will understand only 0 comma 1। They are called what? 0 comma 1 means they are called your binary numbers, machine language, digit, binary bits, okay, all are equal। सो ऑब्जेक्ट कोड, उसी को ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। ऑब्जेक्ट कोड मींस मशीन लैंग्वेज, 0 का 1। ये किसका काम है, एरर मींस आपने इंट डाला इधर, वेरिएबल्स, आई टोल्ड यू दैट वेरिएबल्स आर फॉर द
डाटा। वही कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बोलते हैं? डाटा वैरी होता है। डाटा वैरी होता है। सो इट्स गिविंग वर्ड। अगर आपने इसको लिखना है, रिजल्ट चाहिए, तो इधर आपको डाटा टाइप चेंज करो। इसको बोलो डबल। डबल इज व्हाट? डबल इज ए डाटा टाइप टू स्टोर data, float data, decimal data in this variable my num. Now run yourself. Then what? आप बता रहा है कि my num is a variable. ये उच टाइप ऑफ वेरिएबल है, स्टोर करता है डबल डाटा टाइप। डबल मीन्स फ्लोट नंबर है, मैंने आपको इधर बताया था क्लास में पढ़ते समय। डबल मीन्स क्या है? डबल डाटा टाइप क्या बताया मैंने आपको? डबल। डबल मीन्स किसको स्टोर करता है? फ्लोट पॉइंट नंबर्स को। फ्लोट पॉइंट नंबर्स क्या होता है? डेसिमल से शुरू होता है। 19.99, 19.0 ऑल्सो फ्लोट डेसिमल, डेसिमल वैल्यू। ठीक है। तो अभी आपको इट इज गिविंग, व्हाई इट इज गिविंग एरर? इट इज व्हाट, which number it is giving? It is not giving error, it is giving right 15.0। it is float value। आप डबल डिक्लेयर नहीं करेगा, आप इंटेजर करेगा तो इट विल गिव एरर। व्हाई? बिकॉज 15.0 इज फ्लोट वैल्यू, देन इट विल गिव एरर। अगर आप रिजल्ट चाहिए तो 15.0 इज ए फ्लोट है, तो फ्लोट को नाउ 15.0, ओके, इट इज टेकिंग, no, it is not giving error, there is no any issue, but 15.0 up to okay, 15.01, so it is float value. Now let us see what happen, it will give error. Okay, 15.0 is being considered as okay, so it is taking round up, huh? Okay, no issue, I will explain what is happening here. Okay, try to understand what is going in the class. Hmm. Okay, here I told you that this is the variable. Okay, variable you can keep any value here. You keep my name Vasu. There's no any problem. XYZ your name. So whomever attending the class, okay, keep his name. Okay, why it is giving error? You have declared the variable Vasu, but you are calling my name. So my num is not created. There is no any my num location, memory location. Only Vasu memory location created. In that memory location, the memory location named as Vasu. Vasu is a variable stored with this value. But you are calling my num. There is no any my num. So you need to call what? Vasu. Vasu. Now you run this code. Okay. You will get 15. Okay. Return zero is compulsory. Compulsory. I told you. Return zero बहुत ही जरूरी है। मैंने बताया कोड के लास्ट में जस्ट ये फ्लावर ब्रेस, क्लोजिंग फ्लावर ब्रेस के सामने रिटर्न जीरो को लगाना है आपने। ये रिटर्न जीरो लगाया तो आपको क्या होगा? Vasu is a variable created. It stores, it is integer type of data. This variable Vasu stores integer type of data. So whenever you call Vasu को जब कॉल करेंगे ये 15 आया। नेक्स्ट आप चलेंगे, वेरिएबल वासु है, इसको कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जेड, सिंपली इफ यू कीप एक्स देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई variable means, I told you that variable is what, it changes time to time, value will be changed. Why we are getting error? Because you have declared variable as x, but you are calling vasu, there is no any vasu variable, so you call this x only. Whenever you call x, that value will be called. Okay, so I told you that using namespace standard, std is a library that will be used to, it will be used the names for
objects and variables. Okay. So now you want to omit this. So here you need to, in place of this cout std and two columns. Okay. Remove this std from here. So std standard library we can use in front of cout. Cout will is a object which will be used to get output on the screen. cout आउटपुट लेने के लिए कहाँ आउटपुट लेना, स्क्रीन में आप आउटपुट देखना चाहते हैं, सो cout इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है उसको इस्तेमाल करते हैं आप यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड उसको रिमूव करके इधर सिंपली एसटीडी लिख सकते हो जिसे वे, ठीक है। नेक्स्ट आओ क्या चलता है, वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। अब वैल्यू डिक्लेयर बगैर विदाउट असाइनिंग वैल्यू, असाइन वैल्यू बगैर असाइन किए वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेटर बाद में आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ये माइनम हियर वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर बट वैल्यू असाइन नहीं किया, असाइन को वैल्यू को बाद में लिख सकते हैं। एग्जांपल है, देख सकते हो आप इधर एग्जांपल कैसा है, उसके अंदर ये है कि सी एग्जांपल ए है, एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने और एक वेरिएबल आप क्रिएट करो, कोई नहीं डबल लिखो, डबल इज ए वेरिएबल, अदरवाइज आप लिखो बूल, बूल इज ए व्हाट, बूल इज डाटा टाइप, वेरिएबल एक्स इज इक्वल आप लिखो कि ट्रू, ओके। सेंड स्टेटमेंट को क्लोज करो, bool is a variable created, x is a variable, it stores bool type of data and value assigned to as true. Now float double is what, double was to suppose is equal value, you can store which type of float type of data, 100.5, close, close करो। नेक्स्ट which type of data, string, string type of data, string is equal, string is data type, variable create करो, स्कूल, स्कूल इज ए वेरिएबल, उसको बोलो आपने स्कूल का स्कूल नेम चैतन्य, ऑलवेज आपने this type of string type of data sequence of characters that must be kept in double quotation marks and end with semicolon. Char is a data type, create a char what data type, create a variable, always we need to create variables. Char is data type, simply you write letter, letter is single letter, okay, कोई भी variable, name, now single character to be kept in quotation, single quotation marks, see only one single quotation marks, okay, and one character you can store only one character. See these are all data types, okay. You can here int, this is what int type, so we can create variable, later we can assign the data, there is no any problem here. Variable created, directly data assigned. If you don't want to assign the data here, simply you create the variable and then x is equal to true, okay, this is okay. You create the variable and then later you can assign the value. But if you want to call this, if you want to see this value on the display, you need to use one more cout object, cout here, just here use your cout, use insertion operators, then call what in which variable, in x variable, in x variable what is the data stored in x variable, boolean value true. So whenever you call x, you will get the, you will see the true value, that see the true value in your screen.
So how many variables we have created here? How many variables? How many variables we have created? This is one variable. X is a variable. Vasu is a variable. But see, what is the error is what? For true, 1 will be displayed. For false, 0 will be displayed. 1 means true, but true will not be displayed in C++. For true, 1 will be displayed, but 1, it is looking 151. So if you want to get separate, so here you need, I told you that what, that character, next line character. What is that next line character? Where should we use the next line character? That is very important, na? So that next line character can be used here as insertion operator, then endl. Okay, endl is a manipulator which will be used to get a break next line. Okay, otherwise I told you that end line operator. Okay, otherwise you can use what, this is in double quotation marks, use backslash operator and n. Okay, this is also next line character. Otherwise both data will be kept in single line. Okay, I told you that x is holding what, true. You will not get true output. आपको ट्रू डिस्प्ले में नहीं दिखाई देगा, ट्रू के प्लेस में 1 होगा. अगर फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है, फॉल्स इज ट्रू, इज दीज आर बूलियन वैल्यूज in where, in C++. Okay, so whenever you call this x को जब भी कॉल कर रहे हो, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा फॉल्स की जगह पर. अंडरस्टूड. सो पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर करो. ऐसा भी कर सकते, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करो, देन असाइन वैल्यू, असाइन करो वैल्यू को, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये डबल वासु, ये अभी क्या हुआ, वासु इज ए वेरिएबल. पहले डिक्लेयर करो, उसके बाद इसको असाइन करो. वासु इज असाइन, डिक्लेयर्ड ए वेरिएबल वासु. It is double type variable. Letter